Prevention is better than cure. This is what we've heard. बचपन से सुन रहे हैं, all parents, teachers, coaches, everybody keeps on telling us that prevention is better than cure. Definitely it is, but badminton is a high impact sport where you require the entire body agility, you require full body movements and your knees, joints, everything. So to prevent an injury is difficult. We can reduce the injuries, but injury are part of this agility game because there is a lot of movement, a lot of jumping, a lot of agility. So definitely injuries are going to be there. So what my point here is injury prevention would be always an early intervention. मतलब जितना जल्दी हम किसी इंजरी को पकड़ सकते हैं, उतना जल्दी हम उसको क्योर कर सकते हैं. So अगर हमें पता चल जाता है initially there is some pain, अगर हमें पता है कि दर्द हो रहा है, we report it to the doctor, to the physio as soon as possible. We'll be able to cure that injury very early. We'll be able to send the player back to the spot as soon as possible without giving any longer rehabilitation times or waiting longer. You will understand that आगे presentation में और समझ में आएगा. But जितना जल्दी हमें इंजरी के बारे में पता चलता है, उतना अच्छा है. तो जितनी जल्दी हम इंजरी पता कर पाएंगे, पेन है, we have to catch the injuries in first stages. That will be preventing the injuries going on a higher stages, right? So we all know badminton is an all body sport. पूरा body, upper limb, forearms, abdomen, back, सब use होता है badminton में. तो बैडमिंटन की इंजरीज पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन बैडमिंटन की इंजरीज क्यों होता है इस पे करेंगे. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम विद बैडमिंटन इंजरीज इज दैट इफ यू हैव मसल इम्बैलेंस, कोई भी मसल इम्बैलेंस होगा किसी भी जॉइंट के अराउंड जहाँ पे टाइटनेस ज्यादा है, वीकनेस है, अगर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ मसल स्ट्रॉन्ग है, दूसरा ग्रुप वीक है, सपोज हमारी स्पाइन है, एब्स हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम अपनी स्पाइन एक्सटेंसर स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी जो इम्बैलेंस है उस जॉइंट के अराउंड जो क्रिएट होगा, दैट इज गोइंग टू लीड मोर एंड मोर इंजरीज इन फ्यूचर. सो वी हैव टू क्रिएट अ प्रॉपर बैलेंस अराउंड दैट स्पाइन, अराउंड द जॉइंट. एक्सटर्नल फैक्टर्स, आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस जगह पे आपका प्रैक्टिस चल रहा है, वो आप किस कोर्ट सर्फेस पे प्रैक्टिस कर रहे हो. इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन द नॉर्मल कोर्ट तो आपका इंजरीज कम होगा. अगर हार्ड सर्फेसेस है, इंजरीज आर गोइंग टू बी हायर. अगर वार्म अप एंड कूल डाउन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वार्म अप एंड कूल डाउन हैज टू बी रियली गुड. अगर वार्म अप आपका अच्छा है, कूल डाउन अच्छा है, इंजरीज कम होगा. आपका टेक्निक, ट्रेनिंग, ओवर ट्रेनिंग, एट टाइम्स व्हेन यू ट्रेन अ लॉट, आप कंटिन्यूसली ट्रेन करते जा रहे हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू नॉट गिविंग प्रॉपर रेस्ट टू योर बॉडी, रिकवरी नहीं मिलेगा, इंजरी ज्यादा होगा. ठीक है. So these are common causes. We have to understand the causes before relating and understanding the injuries. So we'll directly be going on common injuries in badminton. So first and foremost, this was a research done on European Championship, European Premier athletes. So they just found out that majorly क्योंकि non-contact sport है, यूजुअली इसमें फ्रैक्चर्स नहीं होते, बट मेजर इंजरीज जो बैडमिंटन में होती है वो या तो टेंडन रिलेटेड होती है या लिगामेंट्स रिलेटेड होती है. सो मोर एंड मोर द टेंडन्स और लिगामेंट्स ऑफ अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब आर इन्वॉल्व. मेजरली क्या होता है, क्योंकि वेट बेयरिंग स्पॉट है, लैंडिंग है, लंजिंग है, आप जंप बहुत ज्यादा करते हो थ्रू आउट द स्पॉट, तो लोअर लिम्स, एंकल एंड नी गोज द मैक्सिमम, एंड अपर लिम्ब रोटेटर कफ्स, they majorly go, but it's majorly related to the muscles rather than going to the bones and joints. Okay, first and foremost, we'll be discussing about ankle sprain. सबसे common है, we can see Gabrielle Addock. She had an LCL tear when she was in Premier Badminton League in 2019. आप देख सकते हो कि जब वो बैडमिंटन कोर्ट पे है, उनका पैर अंदर की तरफ इन्वर्ट हो गया, ट्विस्ट हो गया जब वो खेल रही थी, और उनके जो आप राइट साइड में पिक्चर देख रहे हो, सारे लिगामेंट्स जो बाहर की तरफ 3 लिगामेंट्स होते हैं, तीनों लिगामेंट रप्चर हो गए, तीनों लिगामेंट रप्चर हो गए. उनको उसके बाद सर्जरी के लिए जाना पड़ा, एंड आफ्टर दैट शी वाज एबल टू प्ले. शी इज अ प्रो एथलीट, स्टिल शी गॉट अ सर्जरी done and she had an injury. So injury is nothing related to any kind of prevention. हमें जितनी जल्दी उस इंजरी के बारे में पता चलता है, उतनी जल्दी हम उसको करेक्ट कर सकते हैं. So next, common question, ankle sprain या ankle strain. बैडमिंटन में सबसे ज्यादा एंकल इंजरीज होती है. अब स्प्रेन है कि स्ट्रेन है, डिफरेंस सिर्फ इतना है
कि अगर एंकल में लिगामेंट इन्वॉल्व है तो हम उसको स्ट्रेन कहते हैं, अगर मसल्स इन्वॉल्व है तो हम उसे स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो 3 लिगामेंट्स हैं बाहर की तरफ एंकल की, यूजुअली वही जाती हैं क्योंकि इन्वर्जन होता है एंकल का, तो बाहर की तरफ की लिगामेंट स्ट्रेन हो जाती है, तो वी कॉल इट एंकल स्प्रेन। एंड द मोमेंट मसल्स इन्वॉल्व होती है हम उसको एंकल स्ट्रेन बोलते हैं। Now grading में हमें ज्यादा नहीं जाना है, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ फिजियोस हाउ डॉक्टर्स कैन हेल्प यू। अगर हमें पता चल जाए कि आपका इंजरी, जितना जल्दी पता चल जाए कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आपको 3 ग्रेड्स दिखाई दे रहे हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ठीक है, ग्रेड 1 आप मसल देख रहे हो, मसल फाइबर देख रहे हो, वहां पे थोड़ा रेडनेस है। सपोज एक एथलीट खेल रहा है, खेलते खेलते उसको पेन हो रहा है, कोई भी जॉइंट हो सकता है, ये कॉमन जनरल है फॉर ऑल द मसल फाइबर्स एंड ऑल द जॉइंट्स, राइट? सो इफ you are having some pain around an ankle or any muscle, आप सपोज खेल रहे हो, आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो कि पेन हो रहा है, तो क्या होगा कि वो ग्रेड 2 में कन्वर्ट होगा। अभी क्या है, ग्रेड 1 में आप गए, आपने फिजियो को बताया, आपने कोच को बताया कि दर्द हो रहा है, उन्होंने फिजियो को रेफर किया, डॉक्टर को रेफर किया, तो उसके बाद आपका उन्होंने रिहैब किया। मैक्सिमम रेस्ट टाइम अगर ऐसा कुछ इंजरी है मसल में तो 4 से 5 दिन होगा, इमोबिलाइज करेंगे एंड यू विल बी बैक ऑन द कोर्ट इन 4-5 days, राइट? अगर आप इसी मसल ग्रेड पे खेल रहे हो तो धीरे धीरे दैट ग्रेड इज गोइंग टू गेट चेंज टू ग्रेड 2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मसल फाइबर्स हाफ पार्शियल ब्रेक कर रहा है। ठीक है, वी कैन सी देयर इज अ टेयर, सो वी कॉल इट पार्शियल टेयर क्योंकि आधा मसल फाइबर ब्रेक हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर आपको इसमें भी वी कैन हेल्प यू आउट, बट इसमें रेस्ट टाइम बढ़ जाएगा। अब आपको थोड़ा ज्यादा रेस्ट करना होगा, 10 से 15 दिन 20 दिन लग सकते हैं इमोबिलाइज करके इसमें रेस्टिंग के साथ। तो अगर आप इसको रेस्ट करते हो, यू गो टू अ फिजियो एज सून एज पॉसिबल, यू गो टू द डॉक्टर, यू एक्नॉलेज योर पेन कि दर्द हो रहा है, वी आर एक्नॉलेजिंग इट, तो जल्द से जल्द यू कैन बी बैक ऑन कोर्ट इन 15-20 days, बट रेस्टिंग टाइम वुड इंक्रीज विद द इंजरी। अगर इंजरी बढ़ रहा है तो रेस्टिंग टाइम बढ़ जाएगा, आपका आउट ऑफ कोर्ट जाना बढ़ जाएगा, यू विल हैव टू स्टे आउट ऑफ गेम फॉर अ लॉन्गर टाइम। And now grade 3, we can see the muscle fiber is gone through. That's a full tear. Any muscle that goes for a full tear, now physios won't be helping out because conservative management नहीं होगा इसमें। इसमें आपको surgical management के लिए जाना होगा। तो उसके बाद rehab time comes to 3 to 6 months out of game. So it depends. That is why injury prevention, the most important thing in injury prevention right now is that अगर pain हो रहा है, which is very common because you're playing a sport where you're using your joints, आप अपना joints normal population के हिसाब से 200-300 times more use करते हैं, so definitely injury will be there, okay? But if you acknowledge the pain on the right time, you have some pain, you go to the doctor, you go to the physio, and you're acknowledging your pain at the right time, we'll be actually correcting it in the right time. Come time. Can you please mute yourself, please? Okay, so जितना जल्दी हम लोग इस पेन को एक्नॉलेज करेंगे, जितना जल्दी हम ये बता पाएंगे कि दर्द हो रहा है, we don't have to be scared of injury, उतनी जल्दी हम रिकवरी दे सकते हैं और वापस गेम में जा सकते हैं। So this is just a small warm-up video for the ankle. You just have to see that if you use a little bit of warm-up things when you're doing your workouts, warm-up में इसको include कर दो, तो you are basically reducing the risk of injury.
So I hope the video was clear. It was just giving you movements around the ankle जो possible movement कोर्ट पे हो सकती है अगर आप अपने ankle को warm up के time पे prepare कर लेते हो उस movements के लिए तो there are chances that you will have less of ankle injuries. The very common we can just prevent with all these things. So prevention में सबसे important ankle के around आपकी muscles हैं. अगर आप ankle के around जो उसकी muscles हैं चारों तरफ से उसको strong कर लेते हो तो the chances of injury goes down because it'll act like a brace. आपके बिल्कुल ankle के around एक brace बन जाएगा जिससे जब आप movement कर रहे हो जब आप pressure डाल रहे हो it's not going to move around and वहाँ पे ankle की twisting के chances कम हो जाते हैं. So if we can see strengthening, strengthening can be done in various ways. What you can see in the picture, आपको TheraBand के साथ strengthening दिखाई दे रहा है. Ankle के चार ही movement होता है. पैर अपनी तरफ लेने को डॉर्सिफ्लेक्शन कहते हैं. आप अपनी तरफ TheraBand लगा के ले रहे हो तो यू आर एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग द डॉर्सिफ्लेक्सर्स. आप बाहर की तरफ ले रहे हो तो आप प्लांटर फ्लेक्सर स्ट्रेंथन करोगे बाहर वाली मसल्स एंकल के नीचे की तरफ. अगर आप अंदर की तरफ ले रहे हो जो इंजरी में हमने पहला स्लाइड में देखा आप अंदर की तरफ लेके जा रहे हो तो आप इन्वर्टर्स ले रहे हो. आप बाहर की तरफ लेके जाते हो TheraBand के साथ तो इवर्जन कहते हैं. बाहर की तरफ इवर्टर स्ट्रॉन्ग कर रहे हो. ठीक है. अगर आप अच्छी स्ट्रेंथनिंग करते हो एंकल के अराउंड हमने बहुत सारे एथलीट्स में देखा है इट हैज गिवन अस वेरी गुड रिजल्ट्स इन रिड्यूसिंग एंकल इंजरीज. जितने भी एथलीट्स में थोड़ा एंकल अनस्टेबिलिटी था इट हेल्प्स अस इन गेटिंग द एंकल बेटर एंड स्ट्रॉन्गर. So these exercises are really important. Ankle braces they also help. अगर किसी टाइप से आपको लगता है कि ankle is unstable because ligament होगा तो ankle थोड़ा unstable हो जाएगा जब आप moving around the court कर रहे हो. So you can wear ankle braces. It will give you some support moving around the court. It will help. And the very important thing is proprioceptive training. Proprioception क्या होता है? आपका joint sense होता है. आप कहाँ जा रहे हो, moving around the court कर रहे हो, पैर कैसे हिल रहा है तो उसकी ट्रेनिंग देते हैं. हम लोग स्टेबल सर्फेसेस स्टार्ट करते हैं. मतलब एथलीट को कहेंगे कि आप स्टेबल ग्राउंड पे खड़े हो. आप देखते हो जब हम बिल्कुल सीधा खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में एक स्वे होता है आगे पीछे साइड में थोड़ा सा. हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बिकॉज वो स्वे हमारी एंकल से होता है. दैट इज व्हाट वी ट्राई डूइंग इन प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग. ठीक है. तो पहले अगर स्टेबल सर्फेस पे हमें लगता है कि हाँ एथलीट इज एबल टू स्टैंड. एक पैर पे खड़ा करते हैं दोनों पैर पे खड़ा करते हैं वेट के साथ करते हैं. हम बोलते हैं कि आप कैच करो बॉल कैच करो. फिर धीरे धीरे स्टेबल अनसरफेस जो सरफेस है उसको अनस्टेबल कर देते हैं. लाइक हम फोम यूज करते हैं. वी कैन यूज अ डेंस फोम जिसपे एथलीट खड़ा हो सकता है और ऐसे बॉल्स यूज करते हैं. तो जितना आप उसका डिमांड बढ़ाओगे जितना आप उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओगे उतना आपकी एंकल का प्रोप्रियोसेप्शन बढ़ेगा और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आपकी एंकल इंजरीज को सेव करने के लिए. पोस्ट एंकल इंजरीज भी करते हैं ताकि दोबारा री इंजरी अगर ना हो. Okay, now we come on shoulder. We all know that badminton has all overhead activities. Sara forward swing, smash, सब overhead activities है. So there are major group of muscles, बड़ी group of muscles हैं जो इसमें use होती हैं. As we can see in the diagram, बड़ी group of muscles होती हैं. But majorly जो badminton players में injury होता है, that's not of any of big muscles. The muscle that goes off is your rotator cuff. Rotator cuff चार छोटा muscle से बनता है. Supraspinatus, infraspinatus, teres minor and subscapularis. ये चार छोटी मसल्स होती है जो आपके पीछे से शोल्डर पे अटैच होती है. ठीक है. क्या होता है कि ये आपकी शोल्डर की स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है. ऑल ओवर एक्टिविटीज जो ये करती है ये एक्टिविटी जो आपको चाहिए ये सारा का सारा आपका रोटेटर कफ ही करवाता है. मेजरली कैसे करता है? आपका जो हेड ऑफ ह्यूमरस है जो हमारा कंधा है इसका जो जॉइंट है दिस इज क्वाइट बिग एंड जिसके अगेंस्ट जो स्कैपुला का हेड है ग्लिनॉइड आप देख रहे हो उसका साइज और उसके साइज में बहुत डिफरेंस है. स्टिल हमारा जॉइंट बहुत मोबाइल है. शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट दो ही जॉइंट्स हैं जो पूरा मोबिलिटी देते हैं हमको. इट हैज द मैक्सिमम मोबिलिटी. बाकी जॉइंट्स का इतना मोबिलिटी नहीं होता. तो जिस जॉइंट में ज्यादा मोबिलिटी होती है उसका इंजरी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं. एंड रोटेटर कफ का काम क्या है? उस हेड को उसके साथ लगा के रखना. वो चारों मसल्स अंदर की तरफ फोर्स रखते हैं. जो हाथ हम ऐसे रख पाते हैं that's because of our rotator cuff. अगर rotator cuff intact है तो जब आप overhead activities कर रहे हो that will give you power
to keep that hand that way. So आपको चारों rotator cuff muscles बिल्कुल strong चाहिए, so that आपका shoulder stable रहे. Stability is the major function that your rotator cuff does. So अगर आपका rotator cuff is absolutely fine, you will be able to play well. और क्योंकि ये overhead activities होता रहता है, overuse की वजह से majorly rotator cuff injury होता ही है shoulder में. बैडमिंटन में मेजरली हमने रोटेटर कफ इंजरीज ही देखा है. सो आपको कैसे पता चलेगा कि पेन है तो शोल्डर में रोटेटर कफ इंजरी हो रहा है? यू कैन सिंपली रेज योर हैंड. तो जब आप हाथ उठा रहे हो ना, तो थोड़ा थोड़ा रेंजेस में आप हाथ उठा रहे हैं, देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ पेन. तो ऊपर आने के बाद थोड़ा बेटर हो जाएगा, आप ऊपर लेके जाओगे, देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ पेन एट द एंड रेंज. ओके, सो यू कैन फील दैट देयर इज अ रोटेटर कफ इंजरी. यू कैन यूज, आप एकदम अपना आर्म लीजिए, अंदर की तरफ रोटेट करो. अगर आपको पेन होता है, दैट मीन्स रोटेटर कफ इन्वॉल्वमेंट है. आपको फिजियो को कंसल्ट करना चाहिए as soon as possible so that they can help you out in a better rehabilitation. Okay, so जब पेन होता है, it's a dull aching pain. You won't be able to sleep on that shoulder. आप सो नहीं पाओगे शोल्डर के ऊपर. आर्म जनरलाइज्ड वीक लगेगा आपको. Or in case nowadays there are various conservative things that conservative management that we can use to treat rotator cuff. आप देख रहे हो, there are braces. depend करता है कि rotator cuff का injury कितना है. उन 4 muscles में से अगर कोई एक muscle involved है, तो we can use supports, shoulder support, and we can play with the support if it is just a minor strain. But if it is a partial tear or something, we might give you an immobilizer. जैसे आप देख रहे हो, इसमें आपको पूरा रेस्ट करना होगा जब तक आपका पूरा रिकवरी होता है. रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जो भी मूवमेंट्स आपकी रोटेटर कफ की मसल्स करती हैं, अंदर की तरफ कंधा घूमना, जो सबसे ज्यादा स्मैश में फॉरवर्ड स्विंग में यूज होता है, ये वाला मोशन जो आपका यूज होता है, इस मोशन में आपका रोटेटर कफ इन्वॉल्व होता है. आपको ये वाली मूवमेंट सारा थेराबैंड के साथ, आप वेट कफ के साथ, किसी के साथ भी ये वाली मोशन स्ट्रेंथन कर सकते हो. सो एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, बाहर की तरफ हाथ जाना, ये सब मूवमेंट्स आप अलग अलग डायरेक्शंस में यू हैव टू स्ट्रेंथन. आपको बेसिकली रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग का रिजीम इंक्लूड करना चाहिए अपनी डेली वर्कआउट्स में. मोर स्ट्रॉन्ग योर रोटेटर कफ इज, लेस इंजरीज इट विल हैव. टेंडनाइटिस. टेंडनाइटिस इज नथिंग. टेंडन आपकी मसल का अटैचमेंट होता है जो आपके बोन के साथ कनेक्ट करता है आपकी मसल को. इन्फ्लेमेशन, अगर टेंडन में इन्फ्लेमेशन आ गया तो उसको हम टेंडनाइटिस कहते हैं. नाउ मेजरली कंसीडरिंग अबाउट द एल्बो, अगर टेंडनाइटिस आपके एल्बो में बाहर की तरफ है, अगर आपको बाहर की तरफ एल्बो में दर्द हो रहा है, तो हम उसको टेनिस एल्बो कहते हैं या लैटरल एपिकॉन्डाइटिस कहते हैं. एल्बो में पेन अंदर की तरफ हो रहा है तो हम उसको मीडियल एपिकॉन्डाइटिस या गोल्फर्स एल्बो कहते हैं. मेजरली आपके रिस्ट मूवमेंट में आपकी एल्बो में पेन आएगा. ठीक है, अगर आप रिस्ट ऊपर की तरफ ले रहे हो तो टेनिस एल्बो, बाहर की तरफ पेन आएगा. अगर आप रिस्ट अंदर की तरफ ले रहे हो और इसमें पेन आ रहा है, दैट मींस गोल्फर्स एल्बो है, आपका अंदर की तरफ पेन आएगा. ठीक है, और मेजरली बैडमिंटन में बहुत कॉमन है. मेजरली एमेच्योर बैडमिंटन प्लेयर्स में उसमें बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ द टेक्निक. You are not, if you are not using your forearm properly and using more of your wrist, अगर आपका सारा force आपकी wrist से आ रहा है rather than your forearm and your shoulder, the wrist is going to go, wrist will have impact on your extensor बाहर की तरफ. तो जैसे ही आप ये movement करते जाओगे, अगर आपने रैकेट टाइट पकड़ा हुआ है या फिर आप बिल्कुल स्टिफ हैंड के साथ टेक्निक पोर है, that's the only reason you will have golfers and tennis elbow. बाकी कोई रीजन है नहीं. मेजरली जो बहुत एलीट एथलीट्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स नहीं देखा जाता है. पटेलर टेंडनाइटिस. पटेलर टेंडनाइटिस छोटा सा टेंडन है, आप देख सकते हो. पटेला जो हमारा नी कैप है उसके नीचे एक टेंडन होता है जो हमारी शिन बोन के साथ अटैच करता है. तो अगर वहां पे इन्फ्लेमेशन है तो उसको हम पटेलर टेंडनाइटिस कहते हैं. ये बैडमिंटन में बहुत कॉमन इंजरी है क्योंकि बार बार एक ही जगह पर बहुत स्ट्रेस होता है. आप जंप करते हो, लंजिंग करते हो, जितनी बार जंप होता है, अगर उसमें ओवर ट्रेनिंग है और हम रिपेयर होने का टाइम नहीं दे रहे हैं टेंडन को, तो वो इंजरी में या इन्फ्लेमेशन में जाएगा. सो अब मेजरली जब आपको पटेलर टेंडनाइटिस है तो जो आपका पटेला का नीचे का हिस्सा है, क्या तो वहां बहुत तेज पेन होगा, या फिर आपका जहां पे वो टेंडन अटैच आप देख रहे हो शिन बोन के पास, अगर वहां दर्द हो रहा है तो आपको बहुत सॉलिड पेन वहां पर होगा. बीच में कहीं टेंडन में इसमें पेन नहीं आता है. और अगर आप रनिंग कर रहे हो, स्टार्ट किया आपने, यूर रनिंग और यूर इन द स्टार्ट ऑफ द मोशन थोड़ा सा पेन होगा. आप जब मूवमेंट कर रहे हो या प्लेइंग तब कम पेन होगा.
Jumping will increase the pain a lot. जब आप jump कर रहे हो, बार-बार jump करते जा रहे हो, उसमें इसमें pain सबसे ज़्यादा होगा. अगर आप normal run कर रहे हो या squat कर रहे हो, उन motions में you won't have that much pain. It would be like 1 out of 10. और जैसे ही आप jump करना start करते हो, तभी इसको jumpers भी बोलते हैं. जैसे ही आप jumping करते हो, आपके नी के anteriorly pressure आता है jumping की वजह से, तो वहाँ पे pain होना start होता है. Jumping will increase the pain like 7 out of 10. So how can you prevent patellar tendonitis? Agar pain ho raha hai, you should not play through the pain. You have to have some intervention into it. You should strengthen your muscle and tendon and keep it strong. Quadriceps tendon का extension होता है. जो quads है नीचे की तरफ आती है, घुटने पे लगती है, तो उसका extension है. अगर आप वो tendon strong रखोगे तो injury के chances कम रहते हैं. और जब आप landing करते हो, jump से landing करते हो, you have to see the movements because there is lot of acceleration and deceleration throughout the play. आप एकदम से speed बढ़ाते हो, एकदम से speed कम करते हो when you're moving across the court. So because of that acceleration, deceleration, that's a sudden movement at the joint all the time. And that tendon keeps on taking that stress. So we have to see the landing techniques, the change of movements. You have to focus on that and keep the knee as strong as possible. So how do we deal with it? If there is patellar tendonitis, these are knee straps that we use below at the patellar tendon so that the tendon gets little bit of support. Pain ज़्यादा नहीं होगा. Knee supports, knee caps, ये सब चीजें use होता है. Kinesio tape gives us very good results. अगर हम tape करते हैं across, तभी while the athlete is playing across the court will not have any pain. और extracorporeal shock wave therapy that we have, हमने बहुत athletes पे patellar tendonitis में इसको use किया है. इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है because ये basically आपका जो tendon है, it helps us rehabilitate it very fast. Wrist pain. Wrist pain is again a very common thing because of repetitive force on your wrist. Majorly आप बहुत ज़्यादा tightly अपना racket पकड़ते हो या फिर आपका position of holding your racket is not right. You will have wrist pain. अगर racket का weight ज़्यादा है, according to you, because that depends upon athlete to athlete, it varies. So over time, if you have a faulty technique, you're using more of your wrist, you will have pain. And the athletes who are playing for a very long time, after 30, 35, they might have some arthritis. There would be some tendonitis across. अगर हाथ नीचे जाने में थोड़ा pain करता है, तो बाहर की तरफ थोड़ा tendon inflammation हो सकता है. उसको हम Dicker veins कहते हैं. So wrist is a very complex joint. We just have to keep it protected all through. We can use wrist straps while playing, as you can see. Stretching of the wrist muscles, the forearm muscles is very important. All through stretching of all the muscles, you can stretch it this way, you can stretch it this way. I think everybody does stretches in warm up and cool down, but if you have wrist pain, you should stretch it a little bit often. Okay, so strengthening of your wrist muscles, very good. Gripping, I've seen many athletes do, but I haven't seen extensors done by many athletes. You're supposed to do the extensions as well, because we have to balance both the groups. You're holding, your grip muscles are there, but then you're weakening the extensors. You have to get good strength in both the muscles, okay? Because you're using your hand too much. So once you are doing your gripping exercises, it's good that you do your extensions as well for your wrist tendons, okay? So you can do your weight trainings, taking half kg weight across your wrist. You can do strengthening with that. You can do wrist curls with the bar, or you can do finger squeezes. You can take any towel or cloth, you can squeeze, you can do the gripping. You can start with all 5 of them. You can leave one, you can start strengthening the other 3. You can start strengthening the other 2. So that will help you strengthen the tendons across your wrist and help you reduce injuries across them. So we come on the next injury, Achilles tendon rupture. We'll have a video, it's a self-explanatory video. The Achilles tendon, also known as the Patellar tendon, is the largest tendon in the body. It is a strong, thick tendon that connects the calf muscles to the heel. It is involved in pointing the foot downwards away from the leg, or plantar flexion.
The ankle stable when you walk, run, jump, or tiptoe. Sudden acceleration, deceleration, forced twisting or jerking of the foot, and sometimes overuse of the tendon can cause the Achilles tendon to rupture. 80% of ruptures occur during recreational sports. The tendon can be partially torn or completely ruptured, resulting in a snap sound. When a rupture occurs, the common presenting signs will be weakness with push on. The doctor can often fill the gap in the Achilles tendon by running their finger along the patient's ankle. An Achilles tendon rupture can be confirmed by an MRI or ultrasound. The treatment can be non-operative or through surgical interventions. A rupture can take up to 12 to 16 weeks to heal after surgery. Athletes typically return to sports after 3 to 6 months. You can learn more about the human body with complete anatomy. Okay, so I suppose Achilles tendon rupture was understood by the video. It is basically the tendon that attaches your calf muscles to your calcaneum. And the moment you have a tight calf, you land it on a wrong position, wrong mechanics when you jump or you lunge, it has a rupture, means it has a break free directly. And if it is broken, basically you have to go for a surgical management. So prevent Achilles tendon rupture, you have to stretch and strengthen your calf muscles. That's the basic thing that you have to do. Stretching the calf muscles in 2 different positions. You have calf muscle is made up of 2 muscles, one gastrocnemius and soleus. You have to stretch gastrocnemius, as you can see in the diagram. If you keep your knee straight and do not lift up your heel, you are actually stretching gastrocnemius. Okay, and then comes soleus. If you bend your knee and then keep your foot entitled and then stretch it, then you will stretch your soleus. You don't have to lift up your heel while stretching these both. If you keep good stretch, you lengthen your muscles normally, they tend to get less of injuries. And then you have to strengthen it. Strengthening can be done in n number of ways for calf. You can do your heel raises with weights, without weights, single leg raise. There are various ways you can do it. But at the time of rupture, you have to take rest. You have to wear good shoes when you're playing anytime, whether it's practice or on the court, you have to wear good shoes and you have to maintain healthy weight, not getting Achilles tendon rupture. Blisters, they are again very common injuries in badminton. All badminton players know it. It basically is a friction from your skin, socks and shoes that creates some lymph fluid across. And we know China's Chen Long. He's a gold medalist in Rio Olympics. He was supposed to win gold this year, but because he had a blood blister under his big toe, he couldn't win it this time. So he had to settle for silver. So blisters can be complicated and it's always better to avoid them so that we do not have to face any kind of pain while playing, because if there is pain, the play and the performance gets affected. So how to prevent blisters? First and foremost, your proper footwear has to be there. You have to wear airy shoes. You have to carry more number of socks pairs if they're wet. Always keep your foot dry. Either use some talcum or keep on changing your socks. That is very important. Lubrication, it helps at times if you lubricate, use some jelly across your foot. So it reduces the friction, helps you not getting blisters quite often. And if you have a problem spot that you're getting a blister somewhere around the heel or under the big toe or at the back of your Achilles, you can definitely cover that with blister caps or a tape so that it does not increase or it does not get worse. So injury prevention, we have divided into 2. First and foremost, we all know stretches before and after, that is to be done. We have to stretch in the warm-up, we have to stretch in the cool down so that we keep the muscle length normal. We are not tightening anything, so we can basically 70% we can actually reduce the injuries there if we are stretching before and after warm-ups and cool downs. Secondly, strength and conditioning. We all know it's very important. There are few group of muscles that are more demanding in badminton. There are few which demands less, but it's a full body sport. We have to strengthen the muscles. We have to condition them. That's how we have to build up the muscle strength to reduce injuries. Then comes postural alignment. Nowadays, all the kids have these mobiles, laptops, and they are basically developing a forward neck posture because they sit on that laptop quite often.
And when they're not playing, they're on their mobiles doing something. So if continuously they're sitting on that, the problem is that forward neck posture is actually deforming the whole spine. And if the spine is going for any kind of postural deviations, we are actually getting more prone to injuries, because that, even if little bit of forward neck is there, we are actually deforming the entire spine. So the moment we keep our neck straight, we are actually straightening the spine all through. So we have to maintain correct posture. That is very, very, very important nowadays. So even if you have to use your mobiles, kindly keep your chin tucked in, keep your mobile in front of you. Do not let your neck go forward. That will help a lot. Maintaining a strong core, that is very important, because that will help you stabilize your spine. Majorly, I've asked many athletes that they're doing core. They say that going into the plank is core, which I don't feel that way. You have to, that is a superficial core that everybody is doing. We have to concentrate on deep core. You have to start activating your deep core muscles, because these are the muscles, they're more close to the spine, will give you more stability. When you start majorly like transverse abdominis, multifidus, you have to start training them. These are all coordination exercises. It requires a little bit of time, but once you have that core strong, you will definitely reduce the injuries in your back and you'll get more power. There are many researchers suggesting that badminton with a strong core has helped reduce injuries to an extent. Injury prevention part 2. Okay, body should be subjected to the load it can bear, definitely. If you're starting playing, you have to, you cannot increase the load all of a sudden. You have to be gradually increasing the load. Slowly and steadily, you have to subject loading the particular group of muscles, and slowly and steadily you have to increase. You cannot all of a sudden increase the load on any group of muscles in the body. That will lead you more injuries. Okay, rest, recovery, and adequate sleep, very important. Any kind of tendon, any kind of ligament requires rest and recovery for not going into injury again. If you are not giving adequate rest, the body is not able to repair the tendons. Uska healing ही नहीं हो पाएगा. आप overuse करते जा रहे हो और आप उसको healing का time नहीं दे रहे हो, तो वो heal नहीं कर पाएगा, और heal नहीं करेगा तो दोबारा injury में जाएगा. So that is very important to prevent future injuries, that you are giving proper rest, you are taking good sleep. 50 hours per week is the minimum sleep requirement that is required for athletes to recover. Okay, nutrition and hydration, everybody knows it. It's very, very important. And vitamin B and B12 levels are to be maintained. Vitamin D for your bones, vitamin B12 for your nerves. They're very important. You have to maintain sufficient levels in your body. Okay, if you have injury, what will you do? There is a PRICE protocol that everybody follows. PRICE protocol means P, protection, R, rest, I, eyes, C means compress, and E means elevate. So anytime you have an injury on court, you have to protect that area, rest it. Do not keep on playing on it. Use a lot of ice to reduce the inflammation. Ice इसलिए लगाते हैं ताकि वहाँ का vasoconstriction हो. आप ice लगा रहे हो, उसका जो वहाँ पे blood flow increase हुआ है इंजरी में, swelling की वजह से या इंजरी की वजह से, उसका inflammation कम करने के लिए use a lot of ice to reduce that swelling. Okay, if you feel that swelling is going up, use a crepe bandage or something till you get a help from the physio or the doctor. You can do it if you feel that you have some injury at some point of time where the doctor and the physio is not available. And elevate. Elevate is basically keeping your arm or your hand where you feel that swelling is there above your heart level, so that that swelling goes down with the gravity. You're not having any problem with that. Referral. This is very important. This is the most important thing in the entire prevention program. Why? Because any pain that you have, if you hide it from your coach or the doctor or physio, it gets difficult to tackle it, because then you are playing on the injured tendon, you're playing on the injured ligament, and you are creating the things will be getting more worse. You're going from grade 1 to grade 2 to grade 3 till full rupture. And we don't want that. That will be more time out of court. So always tell your coach that you are in pain. Let them decide for you. They'll refer you to the doctors, they'll refer you to the physio, and they'll guide you further how it is to be done. Okay, these are the 4 things that any kind of acute injury on court or at the time of practice you're not supposed to do. You're not using heat because it will increase the blood flow to that area. You will not drink alcohol. Athletes should not drink alcohol as it is, but at the time of injury, the brain perceptions goes down
and you'll be walking or using that area more unknowingly in the effect of alcohol. So you should not be using it. Running, using that injured part should not be done, and massage on that area should not be done. Okay, this is a video of a champion. She's a gold medalist. We all know her, Carolina Marin. She had an ACL injury on the right knee, but she came back with a proper rehab and won gold again. So this is a video I would like to share with you all. ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ Okay, that's from my side. It was just a video so that हमें ये पता रहे कि कोई भी injury problem नहीं है. If we deal with it in a right manner, अगर आपको अच्छा rehab मिल रहा है, अच्छा सारा injury management मिल रहा है, तो we can deal with any of the injuries. There is no problem, but we just have to find out at the right time so that we do not worse that injury. So we'll end with the quote: "Get fit to play sport. Don't play to get fit. You have to be fit before playing it. आप खेलते खेलते fit नहीं हो सकते हो. So before playing a sport, we should always be fit." Thank you so much. We are open for questions. If anybody has any questions, can ask. Thank you, Dr. Kaul. Thank you. Thank you, Dr. Kaul, for this wonderful session. So अभी मैं participant से request करूंगा कि अगर आपके कोई question है तो आप Dr. Kaul से पूछ सकते हैं. I would request all the participants, if they have any question, please may ask to Dr. Kaul. Sir, can I? Yes, please. Yeah. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Thank you for informative session, ma'am. Devesh Kumar, badminton coach, Odisha Sai Badminton Academy, Bhubaneswar. Hi, sir. या मैम आपने ऑलरेडी सारा चीज कवर कर दिया है, मतलब इसमें हर आपने सब कुछ बताया है.
एक दो जी। चीज जो मैं, अगर आप परमिशन दे तो मैं ऐड करूं, या अपना जैसे कि रिस्ट इंजुरी का हमारे फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर अपर्णा पोपट का भी पहले हुआ है, और जो आप एक टेनिस एल्बो का बता रहे थे, वो समटाइम्स क्या होता है, बच्चे अपना ग्रिप टाइट नहीं पकड़ते हैं इनिशियली, और या उसमें स्वेटिंग आ जाती है और वो हिट करते हैं, ग्रिप घूम जाता है, तो भी यहाँ पे एक बहुत जोर का झटका लगता है जी जी उनको। जी जी मैम। और कुछ इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जैसे कि एक है अंसल यादव करके, उनको एंकल का इंजरी बहुत आता था, देन ही स्टार्ट टेकिंग दैट स्ट्रेंथनिंग ऑफ एंकल एंड ऑल। उसके बाद जो है वो एंकल इंजरी उसको कभी होती भी है तो वो गेम छोड़ता नहीं है, मतलब स्ट्रेंथनिंग के बाद उसका एंकल इतना रिकवर कर गया है कि अगर सडन मतलब जंप के बाद अगर ट्विस्ट भी होता है तो वो गेम पूरा करके फिर वो स्ट्रेंथनिंग कर सकता है। जी एंड वन मोर थिंग मैम की मसल्स इम्बैलेंस के कारण जो है, कई पहले इतने नॉलेजेस नहीं थे कि मसल्स का क्या मतलब, आगे वाले मसल्स और पीछे, मतलब फ्रंट जैसे क्वाड्रिसेप का किया तो हैमस्ट्रिंग का भी करना है, 70-30 का रेशियो रहना है। तो पहले क्या होता था कि नहीं नहीं क्वाड्रिसेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका करो, और लंजेस वगैरह में जो है हैमस्ट्रिंग का काफी इंजुरी हो जाता था बैडमिंटन में। एंड दैट कोर मसल्स जो आपने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर मसल्स ही ब्रिज है हमारा लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब का, क्योंकि वहां पे कोई बोन तो है नहीं, दैट मोर देन 24 मसल्स है कोर मसल्स में। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी अच्छे से कवर किया इसको, थैंक यू। थैंक यू। कोई क्वेश्चन तो नहीं है मैम मेरे साइड से, थैंक यू सो मच। थैंक्स थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिए। Okay. There is some question in the chat box. I think they want to ask कि ACL grade 2 tear है, क्या करना चाहिए? ACL grade 2 tear में आपको फिजियो या डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए immediately, because अगर आप अभी ध्यान नहीं दोगे तो it's going to get worse, because यहाँ से ये बता पाना कि वो grade 2 है, अगर आप आपको खेलना नहीं चाहिए grade 2 पे, you should consult a physio as soon as possible, ताकि आप उसको आगे बढ़ने से रोक सको। आपको एकदम कंसल्ट करना चाहिए। I'm seeing in the chat box. Okay. Hello, So madam. Yes, yes, madam. Madam, ये I'm continuing with this question. जो ACL की recovery है, ये कितनी है? इसको how much long the ACL should be recovered? जैसे कि आपने बताया कि अभी एक question था कि grade 2 का injury है. अगर grade 1 में क्या ACL अपने आप heal up होता है या नहीं होता है, या इसको ऑपरेट ही करना पड़ता है? My question is this, whether it can be ऑटोमेटिकली healing process, इसका स्लो क्यों है इतना? लिगामेंट है, इट्स अ वेट बेयरिंग जॉइंट, हम इसी के ऊपर सारा काम करते हैं। तो लिगामेंट है ना, तो अगर ACL स्ट्रेन है, माइल्ड स्ट्रेन है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द MRI कैसा आता है एथलीट का, उस पर डिपेंड करता है। अगर माइल्ड स्ट्रेन है तो कई बार रेस्ट देके इट गेट्स हील्ड अप, बॉडी रिकवर कर जाती है। लेकिन मेजरली अगर ACL टेयर है तो इट टेक्स अबाउट 4 to 6 months टू गेट बैक टू प्ले, बिकॉज सर्जरी रिक्वायर्ड होगा ही, क्योंकि आपका नी अनस्टेबल हो जाएगा। ACL का काम आपके नी को आगे जाने से रोकना है। ऊपर का जो घुटना और नीचे के घुटने के जो कनेक्शन आगे की तरफ आता है, घुटना ACL जो है वो आगे की तरफ होता है, अगर ब्रेक कर जाता है तो घुटना अपने आप आगे की तरफ जाने लगता है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का है। टेयर है तो डेफिनेटली सर्जरी करना होगा, नहीं तो इम्पैक्ट स्पॉट्स हो नहीं पाएगा, नी बैलेंस नहीं कर पाएगा। स्ट्रेन है, माइल्ड स्ट्रेन है, थोड़ा सा स्ट्रेन है तो रिकवर कर जाता है 2 से 3 हफ्ते में, बट डिपेंड करता है, देयर आर वेरियस लेवल्स डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट यूजुअली यही होता है। अगर टेयर है तो इट विल गो फॉर सर्जरी, तभी आप आगे स्पॉट खेल सकते हो। रिकवरी बहुत अच्छा है,
अगर प्रॉपर रिहैब है ACL के बाद, आपने अभी भी देखा बहुत अच्छे से एथलीट खेल सकता है। स्ट्रेन है तो इट गेट्स रिकवर्ड, माइल्ड स्ट्रेन गेट्स रिकवर्ड, बट टेयर वोंट, टेयर हैज टू गो फॉर अ सर्जरी। आफ्टर ऑपरेशन तो आफ्टर माइक्रो सर्जरी के बाद तो वो एक दूसरे नी से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, आई नो। लेकिन उसमें क्या है कि डॉक्टर एक उसके अंदर कोरोटिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, ये स्टीरॉयड वगैरह कुछ ना कुछ, वो क्या चीज है वो, हाउ इट कैन बी वर्क फॉर हाउ लॉन्ग? Steroid injections are basically just to reduce pain. That's just symptomatic, sir. अगर किसी को बहुत पेन है और वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं हमें तो खेलना ही है, इस हफ्ते कंपटीशन में जाना है, that's the time when steroid injections come into play. कि वो डाल देते हैं, दर्द कम होता है, आप उस पे खेलते हो, but that's not advised because if you are again playing on a strained tendon, ligament, sorry, if you're playing on a strained ligament, आप उसको again and again, वो आपका consciousness उस ligament के लिए खत्म कर देगा। आपको पेन नहीं होगा तो आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे उस जॉइंट को और टेयर की तरफ जाएगा। जो स्ट्रेन आप बेसिकली 2 या 3 हफ्ते में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसकी कंडीशन और भी वर्सन हो जाएगी क्योंकि उसके ऊपर जो सेंसेशन है वो खत्म हो जाती है। पेन बहुत जरूरी चीज है। अगर हमें पेन नहीं होगा तो हम अपने जॉइंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे। दैट्स द ओनली वे जॉइंट्स हमसे बात कर सकते हैं। जॉइंट्स कैन टेल अस ओनली कि वो स्ट्रेन में है बिकॉज देयर इज पेन। पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दर्द हो रहा है तो हम उसका ध्यान रखेंगे, दर्द गायब हो गया तो वो और खराब होगा, और स्टेरॉइड इंजेक्शंस बेसिकली वही करते हैं। आई होप दैट आंसर्स। हाँ मैम नमस्कार। थैंक यू। हाँ हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ नमस्कार मैम। मैम मेरा नाम उदम सिंह है, वैसे तो मैं आर्चरी का कोच हूँ। और मैम मेरे को ना एक बार वैसे ही फुटबॉल खेलते हुए मैंने ना नी में जो ये क्वेश्चन पूछा था, ये मैंने ही पूछा, ACL जो टीयर का है। और मेरे को 3-4 महीने हो गए, मैंने ACL का जो इसका दिखाया हुआ है वो अपने विभू नायक डॉक्टर हैं सफदरजंग में, तो उन्होंने मेरे को PRP के लिए बोला था, तो मैंने PRP भी करवाया है, प्लाज्मा थेरेपी। क्योंकि उनसे मेरी अच्छे से बात हुई थी कि वो कह रहे थे कि एक बार करके देख लो, क्या पता ऑपरेशन ना करना पड़े, उससे भी हो जाए। तो मैम आपकी भी कुछ सलाह है कि इसमें वो PRP से हो सकता है? आपने PRP करा लिया है, कैसा है आपका घुटना अभी? मैम मेरे को ना जब मैं अपना ध्यान रखता हूँ घुटने का चलने के टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब अचानक कहीं छोटा सा कोई मतलब गड्ढा होता है उसमें आ जाता है अचानक, तो उसमें ऐसे लगता है कि वो आगे की तरफ जा रहा है। अनस्टेबल है, ACL टेयर है तो अनस्टेबल है। PRP का इफेक्ट अभी तक इतना देखा नहीं गया है। अगर आप स्पॉट में रह रहे हैं तो आपको सर्जरी के लिए जाना चाहिए। घुटना आपका अनस्टेबल है, बकल कर रहा है, आप जैसे ही थोड़ा सा ध्यान कम करते हो आगे चला जाता है, तो ऐसे अनस्टेबल होता रहेगा। दैट्स अ सॉर्ट ऑफ टेयर, यू हैव टू गो फॉर अ सर्जरी। क्योंकि मैंने अभी PRP कराई थी 7 जुलाई को जी, तो उन्होंने 3 महीने के मेरे को टाइम दिया है कि भाई उसकी फिर मेरी एक्सरसाइज भी मैं कर रहा हूँ उसमें कंटिन्यू पूरा उसका स्ट्रेंथिंग के लिए। तो मैम स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज कुछ और हैं जो आप बता सकते हो? क्योंकि जो उन्होंने बताया वो तो मैं कर ही रहा हूँ। क्या क्या मैं वो ध्यान रख सकता हूँ? जैसे मैं स्टेयर चढ़ता हूँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर वो है कि जब अचानक होता है ना तब उसमें पेन होता है। जी देखिए अचानक होगा, वही लिगामेंट का काम है। आपका घुटना स्टेबल नहीं हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। अब हम कितना भी उसमें PRP, यूजुअली अगर बहुत माइल्ड है, आप ग्रेड 2 बोल रहे हो, ग्रेड 2 में मुश्किल है उसका काम करना। तो अगर ग्रेड 2 पार्शियल टीयर है, ग्रेड 2 पार्शियल टेयर है और मैंने आपने अपने CT स्कैन कराया है। जी जी जी, तो आपको हमारा 3 महीने, अभी तो जुलाई से अब तक 3 महीने ऑलमोस्ट हो रहा है, तो 3 महीने जुलाई होगा, सितंबर में हो जाएगा। जी जी। स्ट्रेंथनिंग तो सेम ही है घुटने का। नी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन 2 ही मूवमेंट होती है नी का, तो आप अलग अलग वैरायटी से आप नी एक्सटेंड वो कर रहे हो, बेंड कर रहे हो, 2 ही तरीके से आप नी स्ट्रेंथ कर सकते हो। बाकी वेट बेयरिंग में खड़े होके आप नहीं कर सकते बिकॉज पार्शियल टेयर है, वो शायद आपको बताया भी नहीं होगा उन्होंने करने के लिए। नहीं नहीं बिल्कुल, उन्होंने बताया कि नी के नीचे कुछ तकिया रख के उस पे नीचे की तरफ प्रेस करने के लिए। तो अभी आप करके देखो, 3 महीने खत्म होते हैं, अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं लगता आप वापस उनके पास जाइए, तो आई थिंक इट विल गो फॉर अ सर्जरी। आपको बेटर रिजल्ट उसी से मिलेगा पार्शियल टेयर में। पर एक मैम जैसे मतलब एक्सरसाइज तो मैं कर रहा हूँ ठीक है, पर जैसे मैं चलता हूँ ना, चलने के टाइम पे नी थोड़ा सा भारीपन सा हो जाता है। जी जी होता है, क्योंकि आप ध्यान रख के चल रहे हो ना, आपका नॉर्मल नी नहीं है। जब ACL इंजरी होता है आपका जॉइंट नॉर्मल नहीं हुआ ना, कर पा रहे हो,
का वेट लेके, है ना, आपका बॉडी वेट जा रहा है उसके ऊपर, अब जो उसको चाहिए आगे से आप मसल का बना सकते हो आगे पीछे, आप लिगामेंट जाएगा ही अगर ट्रेन में है तो, जब तक वो रिकवर नहीं करता, मे बी 3 महीने में रिकवर कर जाए। स्ट्रेंथनिंग आप अच्छे से करते रहिए, स्ट्रेंथनिंग करिए, दैट विल हेल्प, डेफिनेटली स्ट्रेंथनिंग हेल्प्स इन ACL। वो आपको बाद में भी करना पड़ता है, पहले भी करना पड़ता है, करिए, ठीक है। ठीक 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 है मैम, थैंक यू। नमस्ते मैडम। हाँ जी नमस्ते। हेलो। हाँ जी, आई कैन। मैं लिफ्टिंग कोच लखनऊ से बोल रहा हूँ मैडम। एक हमारी ट्रेनी है, उसको जो है 2020 में कोविड पीरियड में क्वाड्रिसेप्स मसल ग्रुप में मतलब स्प्रिंट लगा है, हल्का सा सर आपका वॉइस कट रहा है। हेलो। आई थिंक सिग्नल प्रॉब्लम है, वॉइस कट रहा है उनका। सर वॉइस क्लियर नहीं, आई थिंक नेटवर्क इशू है, आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन, आई कैन आंसर दैट वेज। After all, I think he left, वो यहाँ पे भी है नहीं। जी। तो अगर किसी और के कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, otherwise we will close this session and we will meet tomorrow with another session of this specific sports injury and their prevention in boxing sports, and it will be presented by Dr. Raj Lakshmi Sawant. अगर किसी क्वेश्चन नहीं है तो हम इस सेशन फिर क्लोज कर सकते हैं। Sure sir. डॉक्टर कॉल, आपका क्या कॉल है इसमें? Yeah, sure sir, we can end the session. No problem. So shall we close this session? Yes sir. Okay, thank you all participant for attending this session. So we will meet tomorrow. Tomorrow the session will be on specific sports injury and their prevention in boxing sports, and it will be presented by Dr. Raj Lakshmi Sawant. So thank you for joining this session. We will meet tomorrow. Goodbye. Bye. Thanks.